और कुछ नहीं करना ना. You are now unmuted. Hello everyone. Good evening everyone. I hope I'm audible to all of you. Okay, that's all right. Okay, everything is working fine. Okay, so Junaid Tomar is asking, sir, आप class notes बनवाते हो क्या? No, like I do not, make the students to make the notes. What I do, I share the PPT of the class. Okay, जो class में जो भी चीजें हम discuss करते हैं, उससे related मैं PDF format में PPT share कर देता हूँ, जिससे आप revise कर सकते हो. Okay, so Junaid, did you get answer to your question? Okay, that's all right. So everyone, just let me know once, like if I'm audible. Someone unmute yourself and just let me know if I'm audible, then we will begin the session. Okay. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you so much, Prerna. So today, this is going to be the final session on like ancient history. Okay, so in ancient history we were discussing about the Sangam period. Okay, so today what I'm going to do, I'm going to do a quick revision of the things that we have studied yesterday, and then we will build on those topics. We are going to cover the remaining topics. Okay, and apart from this there will be another topic, okay, that is remaining. I will be sharing the like PDF of that particular topic. It is very small topic. You just need to go through that particular PDF. You will be able to understand everything about it. Okay, so today it is a revision cum learning session of the topic that we have studied yesterday. कल हमने एक टॉपिक को पढ़ा है, उसी टॉपिक को हम आज रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद उसके आगे की टॉपिक्स हम देखेंगे. ठीक है, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द संगम पीरियड. जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि संगम पीरियड का जो टाइम पीरियड था, इट वाज फ्रॉम 3rd century BC to 3rd century AD. BC means before Christ, or it is also known as before the common era. AD means Anno Domini. Okay, it means in the years of Lord. So when we talk about the period of the Sangam period, it is from 3rd century BC to 3rd century AD. It is around 600 years. Okay, roughly, Sangam period lasted for 600 years. Okay, so that's the thing. And the area lying to the south of river Krishna and Tungabhadra. Okay, कृष्णा रिवर एंड तुंगा भद्रा के साउथ में जो भी एरियाज थे, वो वाला एरिया हम संगम पीरियड के अंडर हम पढ़ते हैं. इस पीरियड को हम संगम पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कुछ लाइटरेरी सोर्सेज से, कुछ लिटरेचर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. उन लिटरेचर्स को हम संगम लिटरेचर बोलते हैं. क्यों संगम लिटरेचर बोलते हैं? क्योंकि 3 संगम कंडक्ट किए गए थे. संगम मीन्स सम्मेलन. ठीक है, कवियों के सम्मेलन 3 कंडक्ट किए गए थे. सो अकॉर्डिंगली वी हैव नेम्ड this period of history as Sangam period. Like we get the information about this history through the Sangam literary sources. Okay, the first Sangam was held at Madurai, and we do not have any literary work available from that period. Then second Sangam was held at Kapadapuram. Okay, and we have just only one literary sources that is still available. All other literary sources have already perished, and we have with us Tolkappiyam. Okay, Tolkappiyam. So Tolkappiyam is the only literary source which is available from the second Sangam, okay, period. Then apart from this, we have the third Sangam. Third Sangam was also held at Madurai, and we have many many sources that have survived from the third Sangam period. Okay, so these are the 3 Sangams. So like when we revise it, okay, so first and third Sangam were held at Madurai, and second Sangam was held at Kapadapuram. Okay, so this is the thing we studied about it yesterday. And when we study about the Sangam period, we basically talk about 3 kingdoms. कौन कौन से kingdom के बारे में हम पढ़ते हैं? We study about Cheras, number 1. Then we study about Cholas, and then we study about Pandyas.
and Pandyas were the one who had patronized the संगम्स. Okay, इसीलिए हमें संगम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, like from this Pandyas period, ठीक है, और मतलब like you know that's why it is also considered that like Pandyas were the ones who had actually you know like patronized the Sangam period, and जो भी literature यहाँ पे available है they are written in Tamil language. Okay, Tamil, that's why it is also known as Tamil Sangam. Okay, इसको Tamil Sangam बोलते हैं. And now when we discuss about the you know literature that we have you know got from the Sangam period, these literatures are basically you know बहुत सारे literatures हैं. सबसे पहला वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है तोलकापियम. Okay, this तोलकापियम is from the second Sangam period, we had already discussed. ठीक है, second Sangam period का सिर्फ one and only source that is available, that is तोलकापियम. Okay, its author is you know Tolkappiyar or Tolkappiyar. Tolkappiyar is the author of the you know Tolkappiyam, and now it is considered as the earliest of the Tamil literary work. जो भी तमिल में लिटरेरी वर्क अवेलेबल है उनमें से सबसे पुराना तोलकापियम को माना जाता है. ठीक है, इट हैज आल्सो प्रोवाइडेड इनसाइट्स ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम. ठीक है, ये हमें इस यहाँ से हमें उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता लगता है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अनदर सोर्स व्हिच इज नोन एज एट्टुटोगई. ओके, एट्टुटोगई, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स. ठीक है, दीज वर्क्स यस्टरडे आई मेड यू लर्न आल्सो. ठीक है, you just need to you know recall these works. ठीक है, एट्टुटोगई. Then third is Pattu Pattu. Okay, Pattu Pattu consists of 10 works. Okay, their names have been enlisted over here. You just need to revise. Okay, ये सारे जो 6 है, ठीक है, these are important to remember. Okay, Tolkappiyam, Attutogai, Pattu Pattu. Then we have Pathinen Kilkanakku. Okay, it is also known as Kilkanakku. Okay, and we have 18 works of ethics and morals. Okay, जो Pathinen Kilkanakku है, मतलब it consists of 18 works of ethics and morals. And apart from this, we have Silapadikaram. Okay, and its author is Ilango Adigal. Okay, Ilango Adigal is the author of Silapadikaram. Apart from this, when we talk about Mani Megalai, okay, its author is like Sittalai Sattanar. Okay, ये कुछ sources है जो आपको याद रखना है, मतलब you just need to remember their name like Tolkappiyam, Attutogai, Pattu Pattu, okay, Pathinen Kilkanakku, Silapathikaram and Manimegalai. Okay, you have to remember like these are Sangam literature sources. These are Sangam literature sources. Okay, I'm just making you go through these topics once again ताकि वो linkage missing ना हो आज के class में. Okay, so during the Sangam age, okay, South India was ruled by 3 important dynasties. What are those dynasties? One of them is Cheras, then Cholas and Pandyas. ठीक है, जो Cheras है, ठीक है, they had a symbol. ठीक है, मतलब like they used to represent themselves with a kind of flag or symbol. ठीक है, जिसको हम बो बोलते हैं, बो एंड एरो, मतलब like simply bow and arrow से मतलब like this was their symbol. When we talk about Cholas, tiger was their symbol. Okay, Pandyas, fish was their symbol. ठीक है, yesterday we discussed about it. ठीक है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था. Then main source of information about these kingdoms is traced from the literary references of the Sangam period. ठीक है, जो मेन इंफॉर्मेशन मिलता है हमें संगम पीरियड का वो लिटरेरी सोर्सेस से मिलता है. Okay, so that's why it is known as Sangam period. Then when we discuss about the Cheras, okay, when we discuss about the Cheras, so Cheras were ruled, okay, like Cheras ruled over the modern day Kerala. Okay, some of the regions of the modern day Kerala. Kerala मतलब स्टेट है इंडिया का. ठीक है, साउथ इंडिया में western portion of South India में there is a state that is named as Kerala. So in some parts of Kerala the Cheras ruled. Okay, its capital was at Vanji. Okay, its capital was located at Vanji. And when we talk about important seaports of Cheras, these are Tondi and Musiri. ठीक है, Tondi and Musiri are the important seaports of Cheras. ठीक है, उसके बाद हमें वहां से एक इंफॉर्मेशन भी मिलता है थ्रू इंस्क्रिप्शन. It is known as Pugalur inscription. Okay, so this Pugalur inscription belongs to the 1st century AD. ठीक है, Pugalur inscription belongs to the 1st century AD and it has reference to 3 generations of Chera rulers. मतलब Pugalur inscription से हमें 3 जनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है चेरा रूलर के. मतलब 3 जनरेशन, मतलब जैसे हमने
वो डिस्कस किया था, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग मौर्यास, ठीक है, वी डिस्कस्ड दैट लाइक चंद्रगुप्त मौर्य was the was the founder of the Mauryan dynasty. Then we have discussed that their sons have ruled, okay, during the Mauryan period. So हमने generations के बारे में discuss किया था. Similarly here when we discuss about Cheras, so Pugalur inscription gives us information about 3 generations of Chera rulers, okay. Then apart from this, we have Padirupattu. Okay, Padirupattu also provides information on the Chera kings. ठीक है, कुछ Chera kings के बारे में Padirupattu से भी information मिलता है. It is also a literary source. Then अगर हम important rulers के बारे में बात करें Cheras के, ठीक है, so these are the names of important rulers of that particular time period. ठीक है, ये नाम थोड़े difficult है, but like you just have to revise it after learning. ठीक है, it will help you to remember their names. So first important ruler, I'm not saying like these are the rulers in chronological order. ऐसा नहीं है कि ये पहले ruler थे, ये दूसरे ruler है, ये तीसरे ruler है. Not like that. I am just naming some of the important rulers of the Cheras. ठीक है, कुछ important rulers है Cheras के जो Perum Soru Odian Cheralathan. Okay, so this is the first Chera ruler, first important Chera ruler. Okay, his name is Perum Soru Odhian Cheralathan. Okay, then we have another Chera ruler which is Imaya like Varamban Nedum Cheralathan. Then third is Cheran Senguttuvan. Okay, इनका नाम थोड़ा difficult है. Okay, but the thing is after learning it you just need to revise. ठीक है, so Perum Soru Odhian Cheralathan was the first important ruler. Then Imaya Varamban, okay, Nedum Cheralathan was the second important ruler. Then Cheran, Senguttuvan was one of the greatest Chera rulers of that particular time. Okay. Then when we talk about Ilango Adigal, okay, we have discussed that Ilango Adigal has actually, compiled an important, literary source during the Sangam period. It is known as Silapathikaram. Okay. So Ilango Adigal was the younger brother of Senguttavan. Senguttavan is one of the greatest rulers among the Cheras. ठीक है. So Ilango Adigal कौन थे? He was a younger brother. छोटे भाई थे किनके? Senguttuvan के. Okay, and Ilango Adigan ne actually he has authored a source which is known as Silapathikaram. Okay, then Senguttuvan brought the stone for making the idol of Kannagi. ठीक है, Kannagi के idol बनाने के लिए. ठीक है, मतलब he has brought an stone and there is a story related to Kannagi. ठीक है, and the curse of Kannagi. ठीक है, so we discussed about it yesterday. Okay, today I'm just making you revise these things. And this is the Pugalur inscription. You can see over here, like for us it is very difficult to understand because we are from the northern India, but like people who are from Tamil Nadu, they may be able to relate to it. Okay, it is written in Tamil language. Okay, so this is the Pugalur inscription. Actually Pugalur inscription is very important with reference to Cheras because it gives us information about 3 generations of Chera rulers. ठीक है, so Cheras के बारे में क्या ध्यान रखना है कि they ruled over the modern parts of Kerala. Their capital was at Vanji. They had 2 important seaports. They are Tondi and Musiri. And Pugalur inscription belongs to the 1st century AD. And they have reference of 3 generations of Chera rulers. ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट चेरा रूलर्स के बारे में. दीज आर नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट चेरा रूलर्स. देन इलांगो अडिगल इज एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. Why? Because he has authored, okay, he has authored Silapadikaram. Okay, he has authored Silapadikaram. And Ilango Adigal is the younger brother of Cheran Senguttuvan. And Cheran Senguttuvan is one of the greatest rulers among the Cheras. ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है अप टू चेरा. एवरीवन जस्ट लेट मी नो. स्वाति आपको समझ में आया अबाउट चेरास? ओके, okay, that's all right. Anyone having any question, any doubt during the time I'm taking the class? Okay, you can type your queries or you can unmute yourself and you can start speaking. Okay, otherwise I'll consider that you are understanding the things and I'll be moving forward because like we have a lot to cover today and today is going to be the last session on ancient history. Okay, that's the thing. Now let us move to learn little more about the kingdoms of during the Sangam period. So second kingdom is Cholas. Okay, Cholas. So everyone just let me know what is the symbol, okay, that the Cholas used to represent themselves as important rulers.
what is the symbol? Cholas. You just tell me, name of the symbol. Some of you have answered tiger. Okay, tiger is the right answer actually. Okay, Pandyas, they have used, fish. Now, why they have used fish? Because, like most of these like kingdoms, they were basically in the coastal region. Okay, they were basically in the coastal region, and I have already discussed like why they might have used fish as a symbol, because like fish maybe one of their sources of livelihood and all. Okay, so this is the thing. So when we talk about cholas, okay, they controlled over parts of southern Andhra Pradesh and northern and central Tamil Nadu. हमने cholas के बारे में देखा, yesterday we discussed कि मतलब उन्होंने कौन से पार्ट को कंट्रोल किया. They controlled over southern Andhra Pradesh and northern and central part of Tamil Nadu. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कोर एरिया वो एरिया होता है जहां पे स्ट्रांग होल्ड होता है किसी पर्टिकुलर एम्पायर का, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड होता है. ठीक है, सो कोर एरियाज इंक्लूडेड कावेरी डेल्टा. ओके, लेटर इट वाज नोन एज चोला मंडलम. ठीक है, मतलब चोलास का जो इंपॉर्टेंट कोर एरिया था इट वाज चोला मंडलम. ठीक है, चोलास के कैपिटल कहाँ पे लोकेटेड थे? देयर कैपिटल वाज लोकेटेड एट उरायूर. ओके, कहाँ पे लोकेटेड था उनका कैपिटल? देयर कैपिटल वाज लोकेटेड एट उरायूर एंड देन इट वाज शिफ्टेड टू पुहार. ओके, इट वाज शिफ्टेड टू पुहार. Then Karikala. Okay, Karikala was one of the famous king. Okay, from the Cholas. ठीक है, Karikala. Why he was famous? We will discuss about it. Okay, why he was famous? Karikala क्यों famous थे? ठीक है, he was a famous king, and his information is found from पथिना पल्लई. ओके, पथिना पल्लई से हमें करिकला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड ही हैज एक्चुअली फॉट बैटल ऑफ वेनी. ठीक है, ही हैज फॉट अ बैटल, दैट इज बैटल ऑफ वेनी, इन विच ही हैज डिफीटेड अ कॉन्फिडरेसी ऑफ चेरास, पांड्यास एंड सम अदर माइनर चिफ्टेन्स ऑल्सो. ठीक है, कॉन्फिडरेसी का मतलब ये होता है कि जो दूसरे इंडिपेंडेंट रूलर है, दे आर जस्ट कमिंग टुगेदर टू मेक, टू कॉन्फिडरेट, टू मेक देमसेल्व्स सॉलिड पावर्स like that. Okay, they did not give up their authority over their territory. ठीक है, मतलब वो independent थे, they just came together for a particular purpose to make themselves stronger against a common enemy like that. Okay, or to defend themselves like that. Okay, so ये लाइक चोलास, बेसिकली चोलास में भी जो किंग है करिकला. ओके, ही हैज फॉट अ बैटल जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वेनी. ठीक है, इस बैटल ऑफ वेनी ने करिकला ने डिफीट किया किसको? एक कॉन्फिडरेसी को. दैट कॉन्फिडरेसी कंसिस्टेड ऑफ चेरास, पांड्यास एंड सम माइनर चिफ्टेन्स आल्सो. ओके, एंड ही रिक्लेम्ड फॉरेस्ट लैंड फॉर यूज इन एग्रीकल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट लैंड को थोड़ा मतलब रिक्लेम किया. ठीक है, मतलब लाइक, एंड दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड इट लेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चोलास. ठीक है, एंड ही हैड बिल्ट, ओके, द कलनाई डैम. ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक डैम बिल्ड किया, दैट इज नोन एज कलनाई डैम, अक्रॉस द कावेरी रिवर. और इनका कोर एरिया क्या था? वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. कोर एरिया वाज कावेरी डेल्टा. ठीक है, विच वाज लेटर नोन एज चोला मंडलम. ठीक है, बाद में उसको चोला मंडलम के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं पे कावेरी डेल्टा में इन्होंने क्या किया? ग्रैंड एनिकट डैम, बाद में इसका नाम ये दिया गया, लेकिन उस टाइम पे इसे जाना जाता था like Kallanai Dam. Okay, Kallanai Dam was built across the Kaveri River by Karikala. Okay, Karikala ने build किया था. And he founded the port city of Puhar. Okay, and constituted 160 kilometer of embankment across Kaveri River. Embankment simply होता है बांध बनाना. बहुत बड़ी रिवर है, उसके साइड में बांध बनाया, बहुत ऊंचा बांध बनाया, that is embankment. Okay, so he founded the port city. ठीक है, port city क्यों important था? To build the naval power. At the same time, port city allowed them, to connect with foreign powers with reference to trade and all. ठीक है, so since they were located in the coastal area, so port city was an important thing for them. Okay, so he founded this port city which is known as Puhar. Okay, so this is about cholas. तो cholas के बारे में क्या याद रखना है आपको? कि चोलास में एक इंपॉर्टेंट रूलर है करिकला. ठीक है, उनके बारे में ध्यान रखना है. बैटल ऑफ वेनी के बारे में ध्यान रखना है. एंड लाइक सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय करिकला, यू हैव टू रिमेंबर दिस.
You have to also remember कि कौन सा region है जहाँ पे चोलास ने rule किया था. It is southern Andhra Pradesh and central Tamil Nadu. I already discussed that like present day boundary did not match with the boundary of the ancient time. Okay, so boundaries have been changing. Okay, in ancient time it was, you know, the might of a particular kingdom. Okay, with which they used to acquire territory of other people. But in the present context, you know, it is all political. Okay, so like we have state reorganization acts under which, like, you know, government of India can reorganize the boundary of any state. Okay, with reference to many considerations. One of the consideration may be language, geographical location, economic prosperity, and some other, you know, like things can be considered. Okay, so as I have, so language plays an important role. Okay, then so we discussed about Cheras, we discussed about Cholas. Now we are going to discuss about Pandyas. Yeah, Swati is typing something. If she has a question, I'll answer it. Let's see. Okay. So did everyone understand about like Cholas? Everyone just let me know. Cholas समझ में आया सबको? Okay, that's all right. नेहा आपको समझ में आया? गगनदीप and देवाप्रियो. नेहा, गगनदीप, देवाप्रियो. Did you people understand? Okay, that's all right. Okay, so now let us discuss about Pandyas little bit. Okay, we will discuss about Pandyas. So Pandyas ruled over the present day southern Tamil Nadu. ठीक है, Pandyas ने कहाँ पे rule किया? Present day southern Tamil Nadu. मतलब like southern, like their location was the southernmost among these rulers. ठीक है, so they ruled over southern Tamil Nadu. मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में कहाँ पे है ये. ठीक है, I'll show you in the map also. आप यहाँ पे देखो. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चेरास. चेरास के बारे में हमने डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट चोलास ऑल्सो. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पांड्यास. ठीक है, पांड्यास. सो पांड्यास ने सदर्न तमिलनाडु का आज का जो रीजन है वहां पे उन्होंने उस टाइम पे रूल किया. ओके, और टाइम पीरियड क्या था? संगम पीरियड का. एवरीवन जस्ट लेट मी नो, लाइक इट इज ऑल्दो हाईली डिबेटेड अमंग द हिस्टोरियंस, but like in some of the sources it is mentioned that they ruled from 3rd century BC. Okay, 3rd century BC to 3rd century AD. ठीक है, 3rd century AD. So that's the thing. मतलब it is highly debated because like we are solely relying on one of the primary sources from where we get the information. What is that primary source? It is the literary source of the, you know, Sangam period. मतलब जो लिटरेचर उस टाइम पे उस टाइम का हमें मिला है, उस लिटरेचर्स को पढ़ के लाइक वी आर इन्फरिंग द थिंग्स. ओके, सो इट इज हाईली डिबेटेबल आल्सो, एंड लाइक यू नो देयर मे बी फ्यूचर रिसर्चर्स where historians may establish some other time period as well. Okay, so as of now it is 3rd century BC to, okay, 3rd century BC to 3rd century AD, so about 600 years. Okay, about 600 years. So अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पांड्यास. ओके, सो दे रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु एंड देयर कैपिटल was located at Madurai. Why Madurai is important? Because Madurai में दो संगम हुआ था. First संगम and third संगम happened at Madurai. Okay, first and third संगम happened at Madurai. एंड कोरकई वॉज द मेन पोर्ट. ठीक है, जैसे हमने देखा था इससे पहले दो मेन पोर्ट थे एक पर्टिकुलर किंगडम का. ऐसे अगर हम पांड्यास के बारे में बात करें, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, मतलब वन इंपॉर्टेंट पोर्ट वाज देयर, इट इज नोन एज कोरकई. ओके, इसका नाम क्या है? कोरकई. एंड दे पेट्रोनाइज द तमिल संगम्स. ठीक है, उन्होंने क्या किया? Pandyas actually patronized the Tamil Sangams and they facilitated the compilation of the Sangam poems. ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेट्रोनाइज किया तमिल संगम्स को और उन्होंने फैसिलिटेट किया कंपाइलेशन ऑफ द संगम पोएम्स. ठीक है, देन द रूलर्स केप्ट अ रेगुलर आर्मी. जैसे अभी इंडियन आर्मी है हमारे पास, इट इज अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी. ठीक है, सिमिलरली वी हैव इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, लाइक यू नो कोस्ट गार्ड, लाइक दैट. हमारे पास बहुत सारे यू नो लाइक defense personals in different department. Similarly, Pandyas also kept a regular standing army. मतलब हर टाइम पे उनके पास आर्मी होता था. But it was not the case with, you know, many other rulers. They might be having army, but like they used to take,
like help of armies during the time of war only, but at other times those people were farmers and they were doing other work. But Pandyas kept a regular standing army, उनके पास regular army था, ठीक है. And trade was prosperous and their pearls were famous. Pearls क्या होता है? मोती. Okay, मोती, like yesterday we discussed. ठीक है, इनकी मोती बहुत फेमस थी. ठीक है, their मोती मतलब like उनके pearls बहुत फेमस था. Then sati practice was prevalent. Caste and caste was there. Prevalence of caste system was there. And idol worship was also common. सती के बारे में कल हमने डिस्कस किया. What do we mean by सती? And ancient society में सती का importance क्या था, significance क्या था, and at the same time why सती was not a kind of human treatment to to widows. ठीक है, सो वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि सती होता क्या है इन डिटेल यस्टरडे. सो पांड्यास के टाइम पे प्रैक्टिस ऑफ सती वाज प्रिवेलेंट. ओके, दे हैड अ स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम, जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. ठीक है, आइडल वर्शिप होता था वहां पे, एंड विडोज वर ट्रीटेड मिजरेबली at that point of time. Okay, and they adopted Vedic religion of sacrifice and patronized Brahmin priest. ठीक है, Vedic religion में हमने डिस्कस किया बहुत sacrificial activities होती थी. Brahmins were the one who were at the highest varna. जब हमने Vedic period में varna system के बारे में डिस्कस किया तो Brahmins were there. Then like we had Kshatriyas, then we had Vaishyas, and then we had Shudras. Okay, so Brahmins were at the top. Okay, so Brahmins used to influence the Kshatriyas. Kshatriyas were basically like they were the ruling class. ठीक है, वो उनको influence करते थे. They used to make them perform some kind of sacrificial activities. So that's why if a king performs a sacrificial activity, people will consider that like this is something that is that should be followed by other people also. सो उस टाइम पे बहुत सारे सेक्रीफाइस होते थे. कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस के बारे में हमने डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट अश्वमेधा सेक्रीफाइस, वी डिस्कस्ड अबाउट राजसूया सेक्रीफाइस ऑल्सो. ओके, हमने डिस्कस किया कि ये क्यों परफॉर्म किया जाता था, व्हाट वाज देयर इंपॉर्टेंस. ओके, लाइक दैट. Okay, so they adopted Vedic religion of sacrifice and they patronized the Brahmin priest. कौन? पांड्यास. and actually पांड्यास ने ही पेट्रोनाइज किया था तमिल संगम्स को. और पांड्यास के बारे से ही मतलब like through these Tamil sangams, like through these sangam literary sources we get the information about these three rulers. That's the thing. And their power declined with the invasion of a tribe that is known as कलाभ्रास. ठीक है, मतलब ये कलाभ्रास, ये जो ट्राइब थे ये बहुत पावरफुल ट्राइब थे. मतलब लाइक दे हैव इन्वेडेड अ किंगडम, दे हैव इन्वेडेड पांड्यास, and the power or might of the Pandyas declined with the invasion of these Kalabhras. This is the thing. And after the Sangam age, this dynasty lost its significance for more than a century, only to rise once again at the end of the 6th century. मतलब like संगम एज के बाद ये जो डायनेस्टी थी, ये जो पांड्यास थे, ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस काफी लूज हो गई थी, इनकी पावर काफी कम हो गई थी. लेकिन क्या है, लगभग 100 सालों तक इनका मतलब पावर बहुत कम था. बट लेटर ऑन दे रोज अगेन. ठीक है, एट द एंड ऑफ द 6th century. So this is all that we had discussed yesterday also. Today I made you revise. Okay, now what we are going to do, we are going to learn little more on this. ठीक है, कुछ और समझेंगे. Now I want all of you to be attentive. Okay, those people who are attending the class today, who have not attended yesterday's class, okay, you will also get benefited क्योंकि मैंने आपको रिवाइज करवाया है अभी. Okay, so everyone, it is very important to pay attention now because we are going to discuss new topics now. Okay, so now we are going to talk about administration of that particular time period. ठीक है, administration कैसा चलता था. we are going to discuss about संगम polity. ठीक है, उस टाइम पे political structure कैसा था. ठीक है, what was the form of government at that point of time. So they had a hereditary monarchy. Hereditary monarchy मतलब क्या होता है, heredity मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाना. मान लो कि there was a king. ठीक है, there was a king. Now after his king, his son will become the next king.
ठीक है. So means like in heredity, you know, they are like passing on the kingdoms also, authority of the kingdom. ठीक है. मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की मतलब there is a single ruler who rules over the thing, मतलब king. ठीक है. King is the important personality. ठीक है. So the form of government ड्यूरिंग द संगम पीरियड वॉज हेरिडाइटरी मोनार्की. ठीक है. हेरिडाइटरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मतलब लाइक थिंग्स आर बीइंग पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है. पहले किसी रूलर ने रूल किया, नाउ वो राजगद्दी जो है उसके बेटे को जाएगी. ठीक है. बेटे को जाएगी. कोई क्या बोलते हैं, कोई कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज ये प्राइम मिनिस्टर है, कल दूसरा बन जाएगा, आजकल जैसे होता है. सो दैट टाइम इट वाज नॉट द काइंड ऑफ थिंग. ओके. उस टाइम पे संगम, स्पेशली संगम पीरियड में क्या था, इट वाज अ हेरिडाइटरी मोनार्की. ठीक है. सो द किंगडम यूज्ड टू पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ओके. वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो ड्यूरिंग मौर्यास. ओके. सो देन किंग यूज्ड टू टेक द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स एंड कोर्ट पोएट्स. ठीक है. मतलब किंग जो है एडवाइस लेते थे कोई भी डिसीजन लेने से पहले. ठीक है. एडवाइस किससे लेते थे? यूज्ड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड द कोर्ट पोएट. ठीक है. किंग एडवाइस लेते थे, एडवाइस मतलब सलाह लेते थे. ठीक है. मिनिस्टर्स एंड कोर्ट पोएट से. ठीक है. The king was assisted by large body of officials. ठीक है. who were divided into 5 councils. जो किंग है उनको हेल्प करती थी. जैसे अभी होता है ना, मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर को कौन असिस्ट करता है? ठीक है. चीफ सेक्रेटरी. ठीक है. मतलब लाइक यू नो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, यू नो, देन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है. ऐसे करके मतलब लाइक दिस इज द यू नो प्रेजेंट थिंग कि अभी भी मतलब लाइक यू नो दैट थिंग इज देयर. उस टाइम पे भी जो किंग होते थे, ही वाज यू नो असिस्टेड, ही वाज हेल्प्ड by a large body of officials. बहुत सारे officials help करते थे. ठीक है. and these officials can be divided into 5 different councils. उन councils को क्या बोलते थे? ministers को उस टाइम पे बोला जाता था अमाइचर. ओके. ministers were called as amateurs. ठीक है. then priests, they were called as anthanar. okay. priests were called as anthanar. then military commanders, okay, they were known as senapati. जो military commander होते थे उस time पे, senapati. so senapati was also you know was also there to advise the king. okay. then there used to be envoys. ठीक है. envoys क्या होते हैं? envoys are basically you know ambassadors. okay. ambassadors, envoys को उस time पे क्या बोला जाता? थुथार. okay. they were known as थुथार. okay. this is the name. then spy क्या? जासूस. you know spies, जासूस. they were orar, उनको orar बोला जाता है. so these are the names. okay. so the king was assisted by a large body of officials who can be divided into 5 councils. these councils are named like this. ठीक है. ministers, priest, military commander, envoys and spies. ठीक है. ministers कौन? अमाइचर. ठीक है. priest अंथानार, मिलिट्री कमांडर्स सेनापति, इनवॉइस थुथार एंड स्पाइस ओरार. ओके. सो ये थोड़ा नाम आपको याद करना है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर. ठीक है. कि इनके इंग्लिश मीनिंग क्या है एंड लाइक व्हाट इट मेंट. ठीक है. उसका ये चीज है. Then the military administration was effectively organized and a regular army was associated with each ruler. ठीक है. उनका जो military administration था, it was very efficient. ठीक है. and they maintain a regular army also, and that regular army used to be associated with each ruler. ठीक है. जितने भी ruler थे उनके साथ एक regular standing army होती थी. ठीक है. so that like you know like minister like the you know this like ruler does not come under you know attack by few handful people. ठीक है. so the chief source of state's income was land revenue. ठीक है. मतलब like state को अगर पूरी you know रियासत चलानी है, ठीक है, मतलब like if they have to you know run a kingdom, ठीक है, so in that case they need money. where the money used to come from? It used to come from the land revenue, because you know that point of time the society was agriculture based. ठीक है. agriculture based है, based था. if we talk about present day India also, around 60% of the people, okay, are directly or indirectly dependent on agriculture for their livelihood. ठीक है. 60%, almost 60% of India's population is directly dependent on agriculture. okay, directly or indirectly dependent on agriculture for their livelihood. so the thing is, the chief source of state's income of that point of time was land revenue.
okay, and they also used to apply a custom duty, okay, that was imposed on foreign trade. वो foreign trade भी करते थे. They used to have trade with the foreigners. We are going to discuss, like how they used to carry out their foreign trade. So the thing is, the primary source of state's income was land revenue. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? You have to remember. So now let us move little further. Okay. So can anyone among you tell me like what was the form of government during the Sangam period? Sangam period के दौरान form of government कैसी थी? Everyone just let me know. I want the answer from Debopriyo. Everyone else also answer. Debopriyo, try to unmute yourself and let me know what was the form of government during the Sangam period. Okay, so all of you have answered. Okay, I can see a lot of answers. Prapti Bansal, Kanika, Shrutika Hariharan, Shrutika Sharma, Swati Giri, Manu Walia, Kritika Hariharan, and Devopriyo. Okay, so it was hereditary monarchy. Okay, it was hereditary monarchy. Okay, now, so we have understood that. Okay, now let us understand about Sangam polity. हमने देखा like what was the political structure at that point of time, what was the sources of revenue for the state, we have discussed about it. Now we are going to discuss about the society during the Sangam age. ठीक है, society मतलब social structure क्या था, मतलब how the society was there. ठीक है, so वहाँ पे we have already discussed, ठीक है, कि मतलब an important literary source that is Tolkappiyam. So Tolkappiyam refers to five-fold division of the lands. ठीक है, Tolkappiyam में land की division थी. Land मतलब you understanding? We have discussed कि जो primary source of revenue for the state जो था, it was land revenue. ठीक है. So Tolkappiyam में mention किया गया है कि मतलब जो land है उसको 5 तरीके से divide करते थे. ठीक है, 5 तरीके से जमीन, ठीक है, like categorize किया जाता था. It was categorized into 5 forms. ठीक है. Tolkappiyam, can any one of you tell me like Tolkappiyam is from which Sangam period? Tolkappiyam कौन से Sangam period से है? Second. Okay, Gagandeep has answered. Okay, so he has unmuted himself. Okay, Kritika, Kanika, Swatigiri, Manuwalia. Devapriyo is typing. Okay, all of you have answered it right. Okay, Tolkappiyam was from the second Sangam period, okay, and it was the only literary source, okay, that we could recover from the second Sangam period. Okay, that's the thing. So Tolkappiyam refers that like there was five-fold division of lands at that point of time. उस time पे जो जमीन होती थी उसको 5 तरीके से कैटेगराइज किया जाता था, अलग अलग कैटेगरीज में. ठीक है, एक को बोला जाता है कुरिंजी, दूसरे को मोलाई, तीसरा like मरुदम, then Nedal, and then Palai. Okay, so these were different categories of land. ठीक है, पहला कुरिंजी, then Mullai, then Marudam, Nedal and Palai. Okay, so these were the five-fold division. ठीक है, कुरिंजी किसको बोलते थे? कुरिंजी हिली ट्रैक्ट्स को बोलते थे, मतलब जो हिली लैंड होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ों में होते हैं लाइक दैट. ठीक है, उन्हें कुरिंजी बोला जाता था. ठीक है, मुलई, ठीक है, मुलई वॉज पास्टोरल. ठीक है, पास्टोरल मतलब खेती बाड़ी के, मतलब लाइक वहां पे जब हम गाय भैंस चरा सकते हैं लाइक दैट, सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग मुलई. ठीक है, मतलब वेयर आर like cattles can pasture, that's the thing. Then Marudam, okay, Marudam was agricultural land. ठीक है, Marudam was agricultural land. Then when we talk about Nedal, it was the coastal land. Then Palai, Palai was the desert land. ठीक है, ये 5 तरीके से उन्होंने लैंड को डिवाइड कर रखा था. कुरिंची हिली, ठीक है, कुरिंची हिली लैंड, मुलई पास्चोरल लैंड, ठीक है, मुरुदम एग्रीकल्चरल, then Nedal coastal, okay, then Palai was desert area. And ये जितने भी टाइप के लैंड थे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मतलब लाइक डाइटीज होते थे. डाइटीज मतलब उस टाइप के भगवान, लाइक दे वर्शिप्ड अ पर्टिकुलर डाइटी फॉर ईच काइंड ऑफ लैंड. ठीक है, सो लाइक कुरिंजी से रिलेटेड, हिली ट्रैक से रिलेटेड एक डाइटी है जिनको हम बोलते हैं मुरुगन. ठीक है, एंड लाइक
this Murugan deity was, you know, he used to help in hunting and honey collection. Help मतलब वो आके help नहीं करते थे. You understand this particular thing, ठीक है? वो deity है जिनकी worship करते थे लोग. Pastoral deity जो थे मतलब like it was Vishnu, ठीक है? Vishnu helped people in cattle rearing, ठीक है? क्योंकि हम देखते हैं मतलब जब हम यू नो लाइक श्री कृष्णा देखते हैं या विष्णु देखते हैं तो वहां पे देखते हैं ना मतलब विष्णु हिमसेल्फ यू नो गोज इन द फील्ड, ठीक है? मतलब लाइक ही रियर्स हिज कैटल्स एंड फिर वो अपनी गोपियों के साथ फिर वो यू नो रासलीला करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, देन मरुदम. ओके, मरुदम क्या था? इट वाज एग्रीकल्चरल लैंड एंड एग्रीकल्चरल डीटी वाज इंद्रा, ठीक है? इंद्रा, इंद्रा के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था. ही वाज लाइक अनदर डीटी, ठीक है? ठीक है, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डीटी, ठीक है? देन नीदल, नीदल, ठीक है, इनके जो डीटी था, ठीक है, मतलब लाइक ही वाज वरुणन, ठीक है, फिशिंग एंड सॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है? डेजर्ट डीटी लाइक कोरावई. ओके, सो दैट्स द थिंग. Then like from the Sangam period we get the reference of 4 caste. 4 अलग अलग कास्ट का हमें रेफरेंस मिलता है. कहाँ से? संगम पीरियड से. ओके, वी गेट द रेफरेंस ऑफ 4 डिफरेंट कास्ट, ठीक है? 4 अलग अलग कास्ट, कास्ट यू नो लाइक यू नो सोसाइटी. सो एक कास्ट है अरसर. ओके, सो अरसर वर द पीपल हु वर द रूलिंग क्लास. रूलिंग क्लास मतलब जो किंग्स क्वींस एंड ऑल जो रूल करते हैं, ठीक है, उनके कास्ट को अरसर बोला जाता था. देन वी हैड अनदर कास्ट, ठीक है, दे आर लाइक अंथनर. ओके, अंथनर, अंथनार. सो दे हैड अ रोल इन पॉलिटी एंड रिलीजन, ठीक है? अंथनार दूसरा कास्ट था. देन वी हैड वनिगर. ओके, वनिगर. So this was the this was the people who used to trade and do commerce, ठीक है? Then we had Vellalar. Vellalar was those people who were agriculturists, ठीक है? जैसे हमने वैदिक सोसाइटी में देखा था ना, मतलब लाइक हमारे पास ब्राह्मण्स होते थे, क्षत्रियास होते थे, देन वैश्यास होते थे एंड शूद्रास होते थे. ब्राह्मण्स वर द हाईएस्ट वर्णा, ठीक है, at that point of time, but the ruling class they were generally from the kshatriyas, ठीक है, ruling class, because like they had to wage wars time and again, so like they were the kshatriyas. Okay, then उस टाइम पे लाइक इफ यू टॉक अबाउट संगम पीरियड, उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी. देयर वर फ्यू इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हु वर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये ट्राइब्स के नाम है टोडास. ओके, थोडास या टोडास, देन इरुलास, नागास एंड वेदारास. ओके, लाइक वेदार्स. So these are the tribes that lived in this particular time period. Okay, so now before we move further, can any one of you tell me like in how many parts was the land divided during the Sangam period? कितने पार्ट में लैंड को कैटेगराइज किया जाता था? In how many parts land was categorized? Okay, all of you have answered. There was a 5-fold division of land, ठीक है? Sir, could you please go back to the previous slide for just a minute? Yeah, sure, sure. So like Prerna, we get the information about 5-fold division of lands from Tolkappiyam. Okay, Tolkappiyam is a literary source that we have we have been able to get from the second Sangam period. Okay, so it talks about the 5-fold division of lands. These are Kurinji, Mullai, then Marudam, Nedal and Palai. Okay, and this society was divided into 4 castes. Arasar, these were the ruling class people. Then we have Anthanar, they had a role in polity and religion. Then we had Vanigar, were the people who used to do trade and commerce. Then we had Vellalar, okay, they were the agriculturists, right? Yeah, so Prerna, like, do you have a question for me? Okay, that's all right. Okay, so let us move to the next topic. Okay, so now we will understand about the religion during the Sangam period. Okay, we are going to understand religion. So I'm being little quicker today, okay, because like we want to finish the syllabus today itself. Okay, so that like you do not carry forward this burden of reading ancient history like on Monday also. Okay, you just need to do revision.
Okay, we already had multiple classes. Okay, so let us talk about the religion. Okay, religion of the Sangam period. So the primary deity of the Sangam period was Murugan or Sion, okay, who is hailed as Tamil god. ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डीटी थी, मतलब लाइक सबसे इम्पोर्टेंट जो भगवान है जिनकी पूजा करते थे, हिज नेम इज मुरुगन. ठीक है, और उनको सियोन के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इज हेल्ड एज तमिल गॉड. ठीक है, सो मुरुगन मतलब लाइक इफ यू गो टू साउथ इंडिया, स्पेशली तमिल रीजन, you'll find many of the shops and other places to be named after Murugan. Okay, like that. एक करके एक गोल्ड लोन स्कीम भी है ना शायद, लाइक मुरुगन गोल्ड, ऐसा लाइक अक्षय कुमार डू डज दिस थिंग, आई मीन he advertises that particular thing. Okay, so ऐसा है. ठीक है, so मुरुगन Yeah, वो. I think that's Muthoot Finance, Okay, no? Muthoot Finance. Maybe I'm okay. That is Muthoot Finance, but Murugan was an important DT. Okay, that's the thing. So like these are very these are the names that you find over there. This is very common name. Like if you go to South India, na, this Murugan is very common name, but here it is not that common. Quick Gun Murugan. Okay, Devopriyo has written Quick Gun Murugan. Okay, that's all right. Okay. ठीक है, so the worship of Murugan was having an ancient origin, and the festivals relating to god Murugan was mentioned in the Sangam literature. ठीक है, Sangam literature में हमें mention we get the mention of the like festivals that are related to Murugan god. Murugan was honored with 6 awards known as Arupadai Vidu. ठीक है, मतलब लाइक उनके मतलब अवार्ड मतलब सिंपली घर, अवार्ड मीन सिंपली घर, मतलब ही वाज ऑनर्ड विद 6 awards known as Arupadai Vidu. ठीक है, अदर गॉड्स वर्शिप ड्यूरिंग द संगम पीरियड वर मायोन who was Vishnu, then Vendan who was Indran, and Varunan and like कुरवई. ठीक है, ये कुछ गॉड्स के नाम है. लाइक इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर इट्स गुड, अदरवाइज गिव अ क्विक रीडिंग अबाउट इट. यू शुड बी जस्ट रिमेम्बरिंग कि हाँ ये कुछ गॉड्स के नाम है, डीटीज के नाम है. मुरुगन, ठीक है, मायोन, वेंदन, ठीक है, वरुणन, कुरवई. दीज आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स ऑफ दैट टाइम पीरियड. And they used to have a hero stone. वो बहुत important था. We will discuss about its significance also. So the hero stone or nadukal, okay, worship was significant in the Sangam period and was erected in the memory of a bravery shown by warriors in the battle. ठीक है, ऐसे जो लोग थे, ठीक है, like who were the warriors, like who used to show courage, who used to show bravery. ठीक है, उनकी याद में, ठीक है, उनकी मेमोरी में they used to erect हीरो स्टोन. उनको नाडुकाल भी बोला जाता है. ठीक है, these hero stones were known as nadukal. So like these were those stones that used to remind people of the bravery of people like who fought for protecting the territory, okay, during the Sangam period. So that's the thing. So I'll show you the hero stone over here. Okay, so over here you can see, okay, to the right of your screen you can see this is this is one of these stone that is known as hero stone. ठीक है, it is known as hero stone. And similarly एक और concept है, recently it was in news also. ठीक है, मतलब like state of Jammu and Kashmir में भी मतलब ऐसा there is like some form of these type of stones are found from the state of Jammu and Kashmir. ठीक है, so recently they were found little damaged, so it was in news. ठीक है, so you just need to search about that thing and need to learn like what is their name and all. ये जम्मू एंड कश्मीर से था. ठीक है, it was in news. Okay, Jammu and Kashmir is now a union territory, but like it is found in the entire state of Jammu and Kashmir here and there. ठीक है, हीरो स्टोन का concept. ठीक है, so like these are the examples of hero stone that you can see. Okay, Debopriyo is saying, sir, I was in Pondicherry for 2 months. I saw some god idols resembled Ravan like appearance. Yeah, matlab like the thing is in northern portion of India, ठीक है, in northern portion of India most of the people worship Lord Ram. ठीक है, and they consider Ravan as like one of the greatest enemies of Lord Rama, and
people consider over here that Ravan is like he is a kind of Rakshas. But if you go to Sri Lanka, okay, if you go to Sri Lanka, okay, in ancient time, Sri Lanka was known as Ceylon. If you go to Sri Lanka, you'll get to know that people over there, they worship Ravan. Okay, they worship Ravan. And we have some areas in India also, like in the state of Bihar and in some places in UP also, there people worship Ravan. Okay, so that Ravan is considered as one of the greatest kings of Sri Lanka. He's considered as one of the greatest kings of Sri Lanka. Okay, सो रावण पूजा भी करते हैं लोग वहां पे. यहाँ पे क्या है, लॉर्ड राम की पूजा करते हैं और रावण को जलाते हैं हम. ठीक है, लाइक दैट. So you might have seen it rightly, Devopriyo. I guess it's the Sri Lankan influence due to Tamil Nadu's close proximity to Sri Lanka. Yes, you have written it right. Okay, it is like due to proximity to Sri Lanka, and some people like who may be of Sri Lankan origin. Recently, the government of India was, like government of India and government of Sri Lanka had already signed pact, okay, for repatriation of some of the Tamil people who had earlier settled in Sri Lanka, but they are basically of Indian origin. Okay, so for repatriation of those Sri Lankan people to India, and some of the like Sri Lankan people who are staying in India, so like there was a mutual agreement to exchange these people. So like around 8 lakh people have to be exchanged, but like some of them have been exchanged, but like still the thing is going on. It is a diplomatic tension that is happening apart from maritime issues with Sri Lanka. Okay, so that's the thing. So Devopriyo, is it clear? Okay, that's all right. So let us talk about the position of women. Okay, position of women in this society during the Sangam period. Okay, we are going to discuss about position of women in this society during this Sangam period. Okay, so the thing is, there were women poets. Okay, these are the names of those women poets that I have highlighted. Okay, so Avayar. Okay, then we have Nachalayar. Okay, Kakkai. Okay, Padiniyar. So Avayar, Nachalayar, Kakkai, like Padiniyar. So these were the women poets. Okay, these were the women poets from the Sangam period, and they flourished and contributed to Tamil literature. These women poets, they actually flourished and contributed to the Tamil literature. What it shows, what information does it give to us? It shows that like women could also attain education during the Sangam period. Okay, so women could also attain education. So like there was very little restriction on people, on especially women, in attainment of education, because like if they can be poets, if they can contribute to the Tamil literature, if they can contribute to the Sangam literatures that were the one of the largest congregations and gathering of poets. Okay, it means that the society accepted women in societal gatherings. They allowed them to participate in like important discourse, and at the same time they allowed women to give their inputs into some of the literary sources. Okay, so the thing is, courage of women was appreciated in many poems. ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोएम हैं जहाँ पे women के courage को बहुत appreciate किया गया है. ठीक है, so the courage of women was appreciated in many poems also. Then Karpu or chastity was considered as the highest virtue of women. Okay, Karpu or chastity, what it means. Okay, we will understand. ठीक है, मतलब ऐसे दो important words है, you just need to search about it, you'll get to know. ठीक है, basically like once a woman is married, okay, once a woman is married, after marriage she stays loyal to her spouse, like to her husband, with reference to sexual activity, with reference to maintaining that particular thing, like single man women type of thing. Okay, so Karpu or chastity is related to that particular thing, means like a married woman. Okay, a married woman, a married woman like who maintains that kind of physical thing only with her husband. Okay, that's the thing. So it was considered as the highest virtue of a woman. Okay, like for unmarried girls there was another term. Okay, there was another term. Okay, so that is with reference to it was similar concept with reference to brahmacharya. We have discussed about brahmacharya.
like in the Vedic period, later Vedic period, we have discussed about stages of life. हमने देखा था, we have discussed about the stages of life. So when a person, okay, when a person is a student or he's in learning phase, he should be in a state of brahmacharya. Okay, brahmacharya, that's the thing, means like he stays away from physical pleasures and all, because like it may divert his mind and attention. Okay, but like it had different connotations in different religious perspective. हमने डिस्कस किया इसके बारे में, जैनिज्म में भी डिस्कस किया, ठीक है। जो 23rd तीर्थांकर है, ठीक है, उन्होंने पंच महाव्रता में से 4 महाव्रत दिए थे। The 24th तीर्थांकर has added this particular keyword brahmacharya, ठीक है, जिससे हमें पंच महाव्रत बने, ठीक है। So can any one of you tell me what was the name of the 24th तीर्थांकर in Jainism? Mahavira. Mahavira, Vardhaman Mahavira. Yes, Gagandeep, you're right. Okay, what was the name of the 23rd Tirthankara in Jainism? Parasvanath. Okay, so Shrutika, Sharma, and Kanika, both of you have answered it right. Can any one of you tell me, like, what was the name of the first, Tirthankar in Jainism? Rishabh Deva. Rishabh Deva, right, Gagan? सर इसमें साउंड क्लियर आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है. Okay, sir. Have you I changed wasn't your home, that's earphone? why. Yes, sir. I was just using phone for the very first time, you know. That's why Okay, I was asking. okay. Earlier you were using laptop. Yes, sir. Okay, that's all right. Okay. Yes, you are audible, you are clear also. Okay, so this is the thing. And what is the symbol that we use with the 24th Tirthankar? कौन सा symbol से associated है वो? Lion. Lion. Okay. सारे तीर्थांकर्स के बारे में हमने symbol भी discuss किया था, ठीक है? Lion. And cobra was associated with which Tirthankar? Cobra. 23rd. 23rd, Parasvanath. ठीक है, cobra is associated with Parasvanath. We have discussed about it. Okay, so we discussed about karpu or chastity, मतलब like it is the kind of being loyal, okay, to one's partner. And similarly there was another term, okay, that term is used for unmarried women, okay, or unmarried girl, and they had to like stay like they had to see a phase of brahmacharya during before they are married and all, okay. And so what you need to do, you people, just search this particular keyword karpu, and it will give you meaning of this particular word. Along with this you will get to know about the other word also. I'm not able to recall now at this point of time, okay. So that's the thing. Then love marriage was a common practice, okay. Love marriage was a common practice, okay. We discussed an important keyword that is used with reference to love marriage. We have discussed about marital form, अलग अलग form के marriage होता था, असुर विवाह, दैव्य विवाह, इस type के हमने discuss किया. Can any one of you tell me, like, what is the word that we use for love marriage? Gandharva. Yeah, Gandharva Vivah. Gagandev, you're right. Okay, Gagandev and Kanika, you're right. Okay, ये कुछ important terminologies हैं that you have to remember. Okay, these are the things. So love marriage was common practice, and women were allowed to choose their life partners, but the life of widows was miserable. We have discussed why it was miserable. क्योंकि society उनको force करती थी कि आप सती करो, सती practice करो. अगर किसी widow ने सती practice नहीं किया तो सोसाइटी उनको कलंक के नजर से देखती थी, ठीक है, और इसीलिए उनकी लाइफ मिजरेबल होती थी, ठीक है. एंड वी हैव डिस्कस्ड कि हाँ, why society wanted to reinforce and enforce sati practice. It was related with like property, in laws की property से related चीजें थी, ठीक है. So there is also mention about the practice of sati being prevalent in the higher strata of the society. मतलब सोसाइटी में जो हायर स्ट्रेटा थे, मतलब लाइक हायर कास्ट के लोग थे, उनके वहां पे भी सती का प्रैक्टिस बहुत प्रेवलेंट था, ठीक है. So can any one of you tell me, like, what like in how many fold was the caste system was there in the Sangam period? कितने fold division था caste system? 4. 4. Okay, all of you are right. Can any one of you tell me, like, what was the highest caste during that particular time period, that Arasar. rulers? Okay,
Gagandeep, you are answering right. Kanika, Shrutika, Prapti, Manuvalia, Kritika, Swati, Arasar. Okay, Arasar. So these were the people, these were ruling class people. Okay, that's good. Okay, उसको आपको एक बार recall करना है चारों नाम को, ठीक है? You have to recall all these four names. Then the class of dancers was patronized by kings and nobles. ठीक है? Dancers को भी patronize करते थे उस time पे. ठीक है? So now we are going to discuss about economy of the Sangam period. Okay, क्या discuss करेंगे? Economy of the Sangam period. हमने polity देखा, हमने society देखा, ठीक है? We discussed about polity, we discussed about society, we discussed about position of women in the society also. ठीक है? मतलब like women could attain education. ठीक है? But the thing is, life of widows was miserable. ठीक है? And practice of sati was prevalent in the society. Okay, then when we talk about the economy of the Sangam people, the agriculture was the chief occupation and rice was the common crop. ठीक है, वहाँ पे agriculture was the chief occupation and जो land revenue था, मतलब it was the primary source for revenue for the state. Okay, और किस type के crops वो grow करते थे? They used to grow ragi, sugar cane को हिंदी में क्या बोलते हैं? गन्ना. ठीक है, cotton, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनामन. ठीक है? अच्छा, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द हिंदी फॉर्म ऑफ पेपर? या मेनी ऑफ यू आर टाइपिंग. ओके, पेपर. देवप्रिय हैज रिटन जीरा. कृतिका हैज रिटन काली मिर्च. ओके, ओके, Yes, काली sir. मिर्च. Mirchi. Kali mirch. Okay, simply pepper. Okay, what is cinnamon? What is cinnamon? The last one. I don't know like whether I'm Sir, spelling it right. ये भी मिर्ची. ये भी मिर्ची. Yes, sir. Okay, let us see what people are writing. Some people are writing dalchini. Some people are writing ilaichi. Cinnamon. Some people are saying it to be long. यहाँ पे तो बहुत confusion हो गया भाई. ये सब्जी में डलने वाली चीजें हैं, जिन्होंने नहीं पकाया उनको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. ठीक है? So the thing is cinnamon, like these are the things, common things. Okay, so the thing is, so can any one of you tell me like what is turmeric? अब ये बहुत सिंपल है. हल्दी. या गगनदीप, that's good. Okay, ये कुछ ऐसे keywords है that like we come across in our day to day life. ठीक है? Cotton, pepper, ginger, turmeric. ठीक है? ये सारी चीजें. Then the jackfruit and pepper were the famous in the Chera country. ठीक है? Chera country मतलब जो क्या बोलते हैं, केरला वाला रीजन है. ठीक है? वहां पे क्या था, मतलब जैक फ्रूट एंड पेपर वर कॉमन. जैक फ्रूट एक बहुत बड़ा सा फ्रूट है. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? कांटेदार एकदम. Yeah, Devopriyo has written it right. Kathal, Shrutika, Kathal. Okay, so jackfruit is kathal. ठीक है? So kathal was very famous in Chera country. मतलब केरला वाले region में jackfruit was common. Okay, the handicraft including weaving. Okay, handicraft included weaving, metal works and carpentry. Shipbuilding and making of ornaments using beads, stones and ivory. ये सारी चीजें थी. ठीक है? मतलब वो शिप बिल्डिंग भी करते थे, क्योंकि मतलब लाइक इन फॉर मोस्ट ऑफ दीज किंगडम्स कोस्टल एरिया वाज वेरी नियर. ठीक है? सो ऑल ऑफ दीज किंगडम्स एक्चुअली वर वेरी नियर टू द कोस्टल रीजन. ठीक है? उन्होंने कोस्टल सिटी भी बनाया था, पुहार. वी हैव डिस्कस्ड. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी ये कोस्टल सिटी कौन से, लाइक पुहार इज एसोसिएटेड विद विच किंगडम? चेरास, चोलास और पांड्यास. Puhar is associated with which kingdom? Cholas, sir. Cheras, Cholas or Pandyas? Okay, Gagandeep Cholas. has answered Cholas. Let us see. Okay, all of you are answering it Cholas. Okay, that's all right. Kanika, Prapti, Kritika, Hariharan. Okay, that's okay. Okay. And what is the inscription that gives us information about three generations of kings? Okay, of the Cheras. उस inscription का नाम क्या है? It gives information. पागलवर वालार कुछ ऐसा ही था. हाँ, Pugalur inscription. Okay, Pugalur inscription gives us information about three generations of Chera kings. ठीक है? हमने डिस्कस किया था इसको.
ये कुछ मैं फैक्चुअल बीच बीच में पूछता रहता हूँ, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन दे विल आस्क फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड ऑल. ओके, सो दैट्स द थिंग. Then, so these were in great demand in internal and external trade. क्या handicrafts, जो handicrafts वो लोग मतलब weaving, मतलब like you know बुनने का काम, metal works, carpentry, shipbuilding, ये सारे बहुत मतलब these things were in great demand, okay, in the internal and external trade, and that was at its peak during the Sangam period. और मतलब संगम पीरियड के टाइम पे ये जो इनकी इकोनॉमी थी, इट वाज इन पीक. ठीक है. A high expertise was attained in spinning and weaving of cotton and silk clothes. These were in great demand in the Western world, especially for the cotton clothes woven at Urayur. Okay, they were woven at Urayur. मैंने आपको एक मैप दिखाया था अभी, उसमें Urayur actually mentioned है. ठीक है. And there is another place, ठीक है, that location is very important, जहाँ पे first and third संगम हुआ था. Can any one of you tell me what was that place? जहाँ पे first and third Sangam was held, okay, at the same place. Both these Sangams were held, first and third. Madurai. Madurai. Yes, Madurai is an important place. Okay. Okay. Now, can anyone tell me like where was the second Sangam held? Second Sangam कहाँ पे हुआ था? Name of the location. Kapadapuram. Okay. Kapadapuram. Okay. Kritika Hariharan has written Tolakappiyam. No, Tolakappiyam was, it was a like literary source. Second Sangam period से वो मिलता है, but I asked about the location. Okay, location के बारे में पूछा था. Okay. ठीक है. The port city of Puhar became important place of foreign trade as big ships entered this port containing precious goods. ठीक है. वो जो पुहार के बारे में मैंने अभी आपसे पूछा, it was a very important place क्योंकि यहाँ से वो foreign trade conduct करते थे. Okay, they used to conduct foreign trade from here. ठीक है. So they used to do external trade with Greek kingdoms. ठीक है. Greek कहाँ पे है? Greece मतलब like it is in the western side. ठीक है. So Greek kingdom के साथ मतलब they used to do external trade, and many gold and silver coins, okay, were issued by the Roman emperors. ठीक है. वो भी यहाँ पे मिले हैं. ठीक है. Like कौन से? ठीक है. Roman emperor कौन कौन थे? ये Augustus, Tiberius and Nero. These were the names of the Roman emperors, and they had issued many gold and silver coins, and they have been found in all parts of Tamil Nadu, indicating flourishing trade. मतलब like इस टाइप के जो रोमन एम्परर्स ने जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, वो बहुत सारे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हमें कहाँ से मिले? वी गॉट इट फ्रॉम तमिलनाडु. ठीक है. और जिससे हमें पता लगता है कि मतलब दे हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड इन देयर टेरिटरी. ठीक है. देन होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड. ठीक है. बहुत सारे रोमन कॉइन्स हमें मिले. ठीक है. दैट्स द थिंग. Then major export of Sangam age were cotton fabrics. Export क्या करते थे? हम import तो करते थे बहुत सारी चीजें. We used to get like these coins also, gold and silver coins. What were the item or good that we were exporting? We were exporting cotton fabrics, मतलब like cotton से बने हुए कपड़े. ठीक है. And spices like pepper, ginger, cardamom, cinnamon, टर्मरिक along with ivory products, pearls and precious stones. ये सारी चीजें वो थी जो हम एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से. Then major imports for the trade was gold, horses and sweet wine. ठीक है. हम लाइक गोल्ड को इंपोर्ट करते थे, घोड़ों को इंपोर्ट करते थे, हॉर्सेस एंड स्वीट वाइन. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड कि मतलब देयर वाज अ इम्पोर्टेंट किंग. ओके. There was an important king who has asked some like Greek kings to send sweet wine and a philosopher and and some other thing. So what was the name of that king? Anyone who recalls? Who can recall? Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. Was it Chandragupta Maurya? Bindusara. It was Bindusara. Okay. Oh, sorry, sir. Actually, Chandragupta Maurya had, married the daughter of Seleucus Nicator. Okay, so Seleucus Nicator was from that particular region. Okay, so like wife of Chandragupta Maurya came from the that particular region, and Bindusara की mother उधर से थी. So like Bindusara had a natural tendency of making friendship, okay, with the Greek people. ठीक है. मतलब like बिंदुसारा का, क्योंकि उनकी मदर वहां से थी, so she had a great influence on Bindusara. So that's the thing. ठीक है. So like what was the name of the king
to whom Bindusara has asked, ठीक है, to send sweet wine? Uh, Antiochus Antiochus one. Antiochus one. Okay, Antiochus one. Yes, everyone is right. Okay, you are able to recall. That's an important thing. Okay, so that's really an important thing. It simply means you have understood the things. All you need to do is just do a quick revision. ठीक है, बस आपको एक दो बार रिवाइज करते रहना है बीच बीच में, आपको सारा याद रहेगा. ठीक है. देन वी विल डिस्कस अबाउट रोमन एम्फोरे. ठीक है, विद ट्रेसेस ऑफ वाइन. मतलब लाइक ये देखो हमें कैसे पता लगता है कि हम इंपोर्ट करते थे स्वीट वाइन का. हॉर्सेस का तो हमें मतलब लाइक हॉर्सेस के वो कैरकेसेस देख के हमें पता लगता होगा आफ्टर डूइंग कार्बन डेटिंग. गोल्ड कॉइन्स तो मिले हैं वहां से. ठीक है, स्वीट वाइन के इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्वीट वाइन फ्रॉम दीज पॉट्स और जार्स. ऐसी चीजों में तो स्वीट वाइन भर के भेजते थे वो. ठीक है, सो ये जो चीज राइट साइड में दिख रहा है इसमें स्वीट वाइन भर के वो बेचते थे. इसको एम्फोरे बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी, बट इट इज नोन एज रोमन एम्फोरे. मतलब इसमें सिंपली स्वीट वाइन स्टोर करते थे एंड दे यूज्ड टू सेंड इट टू इंडिया. Okay, especially to southern kingdoms. Okay, so these were actually four, okay, wine storage. Okay, Devopriyo अरे has हिंदी said में घड़ा. मिट्टी का घड़ा कहेंगे ना. हाँ, मिट्टी का वही घड़ा. वही. लेकिन घड़ा जो होता है ना वो थोड़ा अलग ही टाइप का होता है. ये थोड़ा लंबे शेप में है लाइक दैट. ठीक है, लेकिन घड़ा बोल सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो मतलब दीज वर दी थिंग्स ऑन विच लाइक इन विच दे यूज टू स्टोर स्वीट वाइन एंड ऑल. वाइन को स्टोर करके इधर बेचते थे. सो संगम एज के एंड पीरियड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. ठीक है, एंड ऑफ द संगम एज. ओके, सो the Sangam period slowly witnessed its decline towards the end of the 3rd century AD. ठीक है, 3rd century AD के एंड तक आते आते संगम पीरियड जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था. ठीक है, then the Calabras occupied the Tamil country post Sangam period for 2.5 century. ठीक है, Calabras कौन थे? Everyone just tell me who were the Calabras. We discussed एक about it. पावरफुल ट्राइब. Yeah, पावरफुल ट्राइब थी. yeah, they were powerful tribe. Okay. और कौन से किंगडम को उन्होंने इन्वेड किया था? Which kingdom did they invade? तेरास. No, no. It was not Cheras. I guess it was Pandyas. Okay, it was Pandyas क्योंकि Pandyas बहुत पावरफुल थे और पांड्यास ने एक्चुअली ये जो संगम लिटरेचर है उनको पैट्रोनाइज किया था. और पांड्यास की पावर डिक्लाइन हुई थी बिकॉज ऑफ द इन्वेजन बाय द कालाब्रास. Okay, so this is the thing, and we find very little information about the history of Calabras. इनके हिस्ट्री के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्योंकि ये ट्राइब थे. उन्होंने खुद तो लिखा नहीं वो संगम लिटरेचर. ये सारा यू अंडरस्टैंडिंग संगम लिटरेचर किनके दौरान लिखा गया था? पांड्यास के दौरान. तो पांड्यास ने अपने बारे में लिखवाया सारी चीजें. ठीक है, अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखवाया. कालाब्रास ने आके अटैक किया उनके ऊपर. तो कालाब्रास मतलब वो ट्राइबल लोग थे, वो ना तो लिखना पढ़ना जानते थे और उनको कोई मतलब नहीं था. दे वांटेड टू अक्वायर टेरिटरी, दे वांटेड टू अक्वायर पावर, दे वांटेड टू ग्रैब लैंड एंड ऑल. ठीक है, सो ये चीजें हैं. इसीलिए हमें कालाब्रास के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलता है. ठीक है, देन the Jainism and Buddhism became prominent during this period. इस period में Jainism and Buddhism बहुत prominent बना. We discussed in detail about Jainism, we discussed in detail about Buddhism, we discussed about Ajivika philosophy and Charvak philosophy also. ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे. And these are heterodox schools of philosophy. कैसे हैं? Heterodox schools of philosophy. Okay. Then the Pallavas in the northern Tamil Nadu and Pandyas in the southern Tamil Nadu drove the Kalavras out of the Tamil Nadu and established their role. ठीक है, पल्लवा ने क्या किया? नॉर्दर्न तमिलनाडु से एंड पांड्या सदर्न तमिलनाडु से उन्होंने कालाभ्रास को बाहर निकाल दिया तमिलनाडु से. पहले कालाभ्रास ने अटैक किया. उन्होंने पांड्यास के टेरिटरी को अक्वायर किया, लेकिन पल्लवा एंड पांड्या ने अलग अलग जगह से उनको फिर हटाया. ठीक है, सो वी हैव सीन ऑल्सो कि लेटर ऑन like one of the kingdom became prominent at the end of the 6th century also. Okay. Okay. Sir, Yes, Prerna. where was Charles during this time when Kalabhras attacked Pandyas and after then they were thrown out of the region?
Okay, I'm sorry. Could you please repeat the first line of your question? Where were the Cheras and Cholas during this time? Okay, okay. So you had asked ki where was the Cheras and Cholas. Basically, see, like Cheras, Cholas, and Pandyas, they were different kingdoms. They themselves have had some kind of rivalry among them. ठीक है, मतलब like जो neighbors होते हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ dispute रहता है, border dispute, ये dispute, वो dispute like that. ठीक है. So क्या है कि मतलब like these Kalabras actually they invaded, okay, they invaded the Pandyas. जब पांड्यास को इन्वेट किया तो मतलब लाइक पांड्यास हैड सम स्ट्रॉन्ग होल्ड इन सम ऑफ द रीजन, नॉट ऑल द रीजन दैट दे रूल्ड अबाउट. ठीक है, तो कुछ जगह पे उन्होंने इन्वेट करके मतलब लाइक दे हैड ऑक्युपाइड द टेरिटरी. उसके बाद वो रीजन जो है पांड्यास को मतलब लाइक दे हैव यू नो लाइक दे हैव अटैक द पांड्यास. तो अब पांड्यास कहाँ पे है, ये साउथ रीजन में. यहाँ पे पांड्यास को अटैक किया उन्होंने, तो मतलब लाइक चोलास इनके ऊपर ही थे, यू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे. ठीक है, तो फिर क्या किया, बाद में उन्होंने कुछ एरिया अक्वायर किया, लेकिन बाद में पांड्यास एंड चोलास ने क्या किया, उनको हटा दिया अपनी जगह से. मतलब लाइक दिस हैपेंड इन डिफरेंट टाइम पीरियड. पहले उन्होंने अटैक किया, ऑक्यूपाई किया, बाद में मतलब लाइक थोड़ा पांड्यास ने हटा दिया, थोड़ा चोलास ने हटा दिया, लाइक दैट. Okay, like we do not know in exact detail about these things. Okay, and we have very less information about the this thing, क्या बोलते हैं, कालाब्रास. लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि कालाब्रास were a tribe and they have invaded some of the regions of Pandyas. Okay, हेलो so yes, Gagandeep. सर, सिलेबस ओवर हो गया ना एंशियंट हिस्ट्री का? हाँ, एंशियंट हिस्ट्री का ओवर हो सर गया. कुछ मेरे डाउट्स हैं कुछ टॉपिक्स पे. ओके ओके, सो लाइक वी विल डू वन थिंग. एक्चुअली एंशियंट हिस्ट्री में ना एक छोटा सा चीज है, वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज यू नो वर्धाना डायनेस्टी. ठीक है, जिसको हर्षवर्धन बोलते हैं ना. हर्षवर्धन, या यस सर, ये भी वर्धाना, साउंड में. हाँ, वर्धाना डायनेस्टी इज देयर. ठीक है, लाइक फॉर दैट थिंग आई हैव यू नो पीडीएफ और पीपीटी रेडी, ओके, फॉर यू पीपल. मेरे पास वो रेडी है, मतलब लाइक यू नो इट इज देयर. If you guys want, I can have an extended session already, like it's been 1.5 hour. If you want to cover that particular topic, we can reassemble again, maybe like we can take half an hour break, we can reassemble again within 1 hour, you know, we can finish that particular thing if you want. यस सर, यस सर. Yeah, otherwise what I'll be doing, like it is very simple topic, I have noted down everything in the PDF itself. Okay, so I'll do one thing, I'll share that particular PDF with the management also, and they'll be sharing with you. If you want to, you know, learn it on your own, matlab like simply reading and understanding you can do. If you want me to have an extended session, we can have an extended session, but like you know, like we will be taking some break for that. Okay, for that thing also I need to speak with the management. थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि हाँ, can we have a session after half an hour, ऐसा. If they allow, we can definitely have. Okay, and we can finish यस the सर, syllabus. दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पीडीएफ से भी खुद भी पढ़ लेंगे, कोई इशू हाँ, नहीं है. मतलब लाइक मैंने बहुत अच्छे से नोट किया हुआ है, मैंने यू नो हाईलाइट भी किया हुआ है. यू अंडरस्टैंडिंग, आई हैव हाईलाइटेड द थिंग्स आल्सो यस wherever सर, आपकी possible. I पीडीएफ have, बहुत अच्छी होती है सर. yeah, thank you so much. So wherever possible I have included map also for you. यस सर. तो सर जो ये किंग कनिष्का थे हम्म. और मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन द ईयर 712 एडी वगैरह, तो ये सब उसी के अंदर है क्या? हर्षवर्धन के अंदर है ये सारी चीजें? नहीं, वो जो है ना, मतलब लाइक दैट वी विल डिस्कस लाइक यू नो इन मिडिवल हिस्ट्री. वो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है. ठीक है, हर्षवर्धन एक्चुअली ना लाइक वर्धाना डायनेस्टी जैसे एंड होती है, वहां से उसके बाद मतलब लाइक मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है. ठीक है, मतलब एंड वर्धाना सर, डायनेस्टी एंड के बाद. सा, साका इरा 17 एडी और कुशाना किंग कनिष्का, हाँ, और कुशाना किंग कैसे कनिष्क. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कैलेंडर भी अडॉप्ट करा है इनका, ये सारी छोटी छोटी चीजें, मतलब इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस जब मैं देख रहा था हाँ, तो वो कैलेंडर्स मतलब. वगैरह हमने थोड़ा डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यू नो लाइक क्रिश्चियन कैलेंडर. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यू नो इस्लाम कैलेंडर, यू नो हिजरी बोलते हैं. क्रिश्चियन वाले को तो आपको पता है ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं. इट इज़ द यस सर. इंग्लिश सिस्टम दैट वी आर फॉलोइंग नाउ. ठीक है, ईडी बीसी सिस्टम जो है, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था. ठीक है, वो साका एरा जो है मतलब लाइक 78 AD से शायद स्टार्ट हुआ है, और मतलब लाइक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज करती है ना, उसमें डेट इंग्लिश में भी लिखा रहता है, और मतलब लाइक हमारे मतलब लाइक इंडियन कैलेंडर के हिसाब से भी लिखा रहता है उसमें.
या मतलब कुछ कुछ फैक्चुअल ऐसे इंफॉर्मेशन है, मतलब लाइक फ्रॉम वेयर यू मे गेट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड देयर, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब लाइक यू पीपल हैव टू पुट लिटिल एफर्ट फॉर इट। जो अभी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो इसके लिए यू मे रेफर यस सर। दैट थिंग ऑल्सो। आई गेस ओके स्पेक्ट्रम सर। पढ़ते हैं, सॉरी स्पेक्ट्रम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, देयर इज अ बुक, फ्लुसेंट। हाँ लूसेंट, यू नो यू गाइस यस रीड सर। लूसेंट, ठीक है। तो यस सर। लूसेंट में यस सर। बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे दिया हुआ है, मतलब यू बहुत कैन ज्यादा रेफर। लिखा हुआ है सर। हाँ बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, या and so the thing is, Kritika is saying we can study on own, no problem. Okay, Kanika is saying, sir, we will read it. Then we can have a doubt session if possible. Okay, so like doubt session se related, like I cannot commit at this point of time ki like whether like I can have a doubt session, like in this batch with you. But the thing is, management will definitely help you with that. I mean, like we have other faculties also who will be taking history. Okay, so sir may have a doubt session with you people. Okay, ऐसा। और yesterday what I did, I shared an email address. Means like if any one of you need any help in general studies, you know, related to how to study, like which topic and all, so you can simply like drop me an email. So it is my name, then you type this thing, okay, at gmail.com. Then सर I'll तो be able to help you out. मेडिवियल सर आप नहीं पढ़ा रहे? मेडिवियल हिस्ट्री। नहीं एक्चुअली गगनदीप, मतलब लाइक मैं एक्चुअली लाइक आई कैन टेक द टॉपिक्स, लेकिन बात ये है कि मतलब लाइक I mean, like I am going out of the institute. That's the thing. ओके। Okay, ओके सर। that's the thing. Okay, विल मिस यू सर। yeah, बहुत I'll अच्छी miss you हिस्ट्री all. पढ़ाई है सर आपने, बहुत मन Thank लग गया हिस्ट्री पढ़ने में। thank you so much. ठीक है, Sir, yes प्रेरणा जी। uh, can you please tell this PDF that you're talking about and all the PDFs that have you shared a PDF for all the topics that we've done in the class? Because I've Yeah, missed, I joined Sangam period before that. Do I watch the lectures or is there a PDF or PPT that I can refer to? okay. So I guess I have taken till now 21 or 22 sessions. ठीक है, 21 या 22 सेशंस मैंने अभी तक लिए हैं आपके क्लास में related to ancient history. And for some of the sessions, like there was a single PDF, मान लेते कि जैसे अगर हम आज के बारे में डिस्कस करें संगम पीरियड, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो, टुडे आल्सो वी आर डिस्कसिंग। ऐसे कुछ टॉपिक है जिनके पीडीएफ थोड़ा बड़ा है, उससे रिलेटेड मतलब एक ही पीडीएफ है, लेकिन मतलब लाइक वी मे हैव हैड 2 or 3 सेशंस, ऐसा है। बट लाइक आई हैव शेयर्ड पीडीएफ ऑफ एवरी टॉपिक दैट आई टॉट इन द क्लासरूम, ठीक है। आई एम नॉट श्योर हाउ द टेक्निकल थिंग्स वर्क एट योर एंड। हो सकता है कि मतलब लाइक यू मे बी हैविंग अ बैकअप क्लासेस ऑफ ऑल दिस क्लासेस, जो भी क्लास में हमने डिस्कस किया है। हो सकता है लाइक इफ यू लॉग इन, you can get the access to all the lectures that has happened. If it is the case, you can watch the classes that you have missed. This is one thing. Or like if you are not getting those lectures, in that case what you can do, you can read the PDFs, because PDF मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन करके हाईलाइट करके सब किया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, लाइक वी हैव दिस थिंग यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ठीक है। उस यूट्यूब चैनल में एक्चुअली ना जितने भी लेक्चर्स है वो लाइव जाते हैं। आज का बस लाइव नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ चेंज इन द टाइम, ठीक है। बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं, लाइक ऑल दीज लेक्चर्स वर मेड लाइव, ठीक है। सो वो जो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज लेक्चर्स, ठीक है। मतलब यूट्यूब में जस्ट सर्च करना हिस्ट्री बाय जाहिदुल सर, लाइक दैट, ठीक है, प्लूटस एकेडमी, देन यू विल गेट, ठीक है प्रेरणा। एंड अगर किसी को वैसा कोई प्रॉब्लम आता है, इन दैट केस यू कैन सिंपली ड्रॉप मी एन ईमेल, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट विद सम ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है, जनरल स्टडीज से रिलेटेड, मतलब लाइक नॉट विद मैथमेटिक्स एंड ऑल। मैथमेटिक्स आई एम रियली गुड एट, बट आई एम गुड एट विद कन्वेंशनल मैथमेटिक्स, मतलब ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नहीं, ओके। सो ये चीज़ें हैं। पीडीएफ रीडिंग से आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। यू विल गेट हेल्प इन रिवाइजिंग, व्हाइल रीडिंग द पीडीएफ। इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम पीडीएफ, इट विल हेल्प यू टू डू रिवीजन। लेकिन जब हमने क्लास में डिस्कस किया ना स्टार्टिंग में, तो हमने बहुत अच्छे से लाइक वी टुक टाइम टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, आप इम्प्रेशन इज क्रिएटेड इन योर माइंड दैट लाइक यू हैव लर्नड एंड अंडरस्टूड द टॉपिक। तो मतलब यू डोंट फेस दैट डिफिकल्टी। सिर्फ बुक से या पीडीएफ से रीड करने से ना, ऑल्दो यू अंडरस्टैंड, लेकिन वो सेंस नहीं आता, सेंस ऑफ कॉम्प्लीशन डज नॉट कम। सो दैट्स द थिंग।
जितना भी हो सके मतलब एनी वन ऑफ यू हु हैज मिस्ड एनी लेक्चर और एनीथिंग, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली उन लेक्चर्स का आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू मतलब फॉर दोज लेक्चर्स, ठीक है, जो आपने देखा है उसका पीडीएफ रीड करो, और जो आपने नहीं देखा, मिस किया है, यू कैन अटेंड दोज लेक्चर्स इन योर फ्री टाइम, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन बहुत मस्ट है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फैक्चुअल सब्जेक्ट, ओके, इट इज़ अ वेरी वेरी फैक्चुअल सब्जेक्ट, ठीक है। So for your like simplicity, okay, you can simply drop a message also here, okay, you can drop a message, I don't know what's the spelling, okay, like that, okay, so this is the thing, I'll be helping you out, no problem। जहाँ तक मेरा मानना है कि हाँ, एंशियंट हिस्ट्री जिन्होंने भी क्लास अटेंड किया है, एनी वन हु हैज़ अटेंडेड द एंशियंट हिस्ट्री, दे माइट हैव अंडरस्टूड इट, आपको बस रिवाइज करना है। जिन्होंने मिस किया हुआ है वो आप एक बार पीडीएफ को पढ़ो, ठीक है, जहाँ पे भी जो पीडीएफ समझ में नहीं आया उससे रिलेटेड आप लेक्चर्स देख लो, ठीक है, टू सेव योर टाइम, वो आप कर सकते हो। जो टॉपिक मैं बता रहा था मतलब वर्धाना डायनेस्टी या हर्षवर्धन से रिलेटेड, उसका पीडीएफ में कंप्लीट करके, ठीक है, मतलब आज इफ आई शेयर इट टुडे इटसेल्फ, तो हो सकता है कि वहाँ पे ना देयर आर सम स्कोप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ऑल। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लाइक बाय टुमारो आई ईमेल दैट पर्टिकुलर पीडीएफ, ठीक है, to the institute, maybe tomorrow or day after tomorrow, Monday you are definitely going to get it, ठीक है। although I have that PDF, 80 to 90% work is complete, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना, like we have to give a final touch ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो समझने के लिए, ठीक है। so that I'll be sharing with the management, वो आपको मिल जाएगा वर्धाना डायनेस्टी से रिलेटेड लास्ट वन, ठीक है। और भी मुझे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है that I'll be sharing, okay, so that's the thing। so everyone, you people are awesome, okay, and like I was like it was really pleasure to be with you in your classroom, okay, to be with you, to discuss the things with you, it was really my pleasure, okay, so like I was able to connect with you people from the very first lecture itself, so that's the thing। so Prerna, Kanika, Kritika, Gagandeep, Devopriyo, Prapti, Bansal, Neha, Shrutika, Swati, and people who are not there in the session, I mean like I may not remember their name, but you guys are awesome, okay, you just keep learning, revise karo aap, theek hai, learn, revise, and it will help you to crack the examination। exam is not difficult, only thing is you have to strategize your preparation, थोड़ा strategy बनानी है आपको, और सही टाइम पे सही चीज रीड करके एग्जाम देना है, दैट्स द थिंग, ठीक है, that will help you। okay, so everyone take care of yourself, okay, so we'll see you sometimes maybe, okay, so be an officer, okay, and all of you can do it, okay, all of you can do it, everyone has the potential in this particular classroom, only thing that you have you have to work on is to strategize your preparation and put regular efforts, ठीक है, मतलब put effort until you get through it, ठीक है। once you get through it, after then your life will be settled for the next 30 to 35 years, whatever number of years you will be in service, that will be settled, these are the initial years in your life that you have to put your effort on, ठीक है। इसके बाद आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, these are the times where when you have to put effort, ठीक है। so that's all everyone, thank you so much, okay, with this I am concluding the session, and so as you people have already suggested, like you will be able to read from the PDF once I share, so today we are not going to have another session, we are not going to have another session today, I'll share that particular PDF, and whatever extra material that I think will help you, I will share all those with you, okay, so that's all, thank you so much, okay, Devopriyo, Gagandeep, Kanika, uh, Kritika, Manu, Prapti, Shrutika, and Swati. All of you take care of yourself. Okay? Bye bye.